Question number 53 from the worksheet. It says figure 1 shows an open tank in the shape of a triangular prism. Okay, नहीं मैं आपको कुछ बता रहा था. वो बताया था फर्स्ट पार्ट मेंसुरेशन का होता है अक्सर, सेकंड पार्ट में डिफरेंशिएशन होती है, और फर्स्ट पार्ट में अक्सर कुछ प्रूव करने के लिए कहता ताकि सेकंड पार्ट आप उसके बाद कर सकें अगर आपसे फर्स्ट पार्ट नहीं भी होता तो. अब मेंसुरेशन के ये फॉर्मूलाज आपके पास सिर्फ गिवन होंगे पेपर में. फर्स्ट पेज जो है फॉर्मूला शीट का, उस पर ये फॉर्मूलाज रखे होते हैं. इसके अलावा कोई फॉर्मूलाज नहीं दिए होते. So for example, you're not given the volume formula for prism, and you're not given the volume formula for a cylinder. ये नहीं दिया होता. बाकी सब आपको दिए होते हैं यहाँ पे. तो प्रिज्म का आपको याद होना चाहिए एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, area of cross section into height, and cylinder is actually also a special type of prism जहाँ पे बस जो base है वो circle होती है. That's also base area into height और pi r square h. ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, बाकी फॉर्मूला शीट में दिए होते हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, कोई नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होगा उसके अंदर. अपने ओ लेवल्स में किया हुआ वही चीजें होंगी. Now let's have a look at this. It says figure 1 shows an open tank in the shape of a triangular prism. Triangular prism means the cross section is a triangle. So this is the cross section, this part. The cross section क्या होता है, जो basically shape पूरी figure में एक तरह से repeat हो रही है. अगर 2D में कोई shape है, ये triangle, इसको अगर आप इसकी कोई height बना लो, इसके ऊपर stack करते जाओ triangle, it becomes a prism. On the other side, you have this triangle as well. So you throw out your shape जो है इसकी triangle. So it looks like a Toblerone basically, this figure. The top is open. It's an open tank. The vertical ends ABE and DCF are identical isosceles triangles. So the cross section है isosceles triangles है. आपको side पे उसने दिखाए भी हुए. ये triangle उसने cross section side पे दिखा दी. Angles are given the length of AD. This length is 40 centimeters. The tank is fixed in a position with the open top ABCD horizontal. Water is poured into the tank at a constant rate of 200 centimeter cube per second. 200 centimeter cube per second, that's the rate of change of volume. ठीक है, ये उसने बता दिया. और depth of water is 8 centimeters. Height या depth, that's 8 centimeters. That's also given. Time is t seconds. तीन वेरिएबल्स आपके पास आ रहे हैं, एक वॉल्यूम है, एक टाइम है और एक एज है. In the first part, it says, show that when the depth of the water in the tank is 8 centimeters, the volume of water in the tank is given by V equals 40 square root of 3 into 8 square. ये आपको prove करना in the first part. Now, how do we think about this? Volume of water की बात हो रही है. Volume isn't that container, तो volume भी उसी shape का आएगा. Volume prism की shape का है. Volume की height sorry, क्या बात कर रहा हूँ मैं? Water जो है वो prism की shape का है. तो जो वाटर की हाइट है दैट इज h. ठीक है, अब आपको वाटर का वॉल्यूम निकालना. वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रिज्म. वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर एरिया ऑफ बेस, however you want to use that. So this is cross section multiplied by the height. Now you need to understand very well what base or cross section here mean. Cross section is the 2D figure, the 2D shape that's repeating throughout the prism. So basically ये triangle जो है throughout ये triangles ही आ रही है आपके पास पूरे इसमें prism में, like this. That's the cross section. जो दो ends हैं, आप इसमें भी सोच सकते हैं, जो दो ends हैं prism के, उन पे क्या shape है? So एक end ये that's at the front, and there's one end at the back side.
ये ट्राइंगल्स है, दिस इज योर बेस। ओके, जो हाइट होती है यहाँ पे, हाइट का क्या मतलब होता है? हाइट होती है कि जो दो दो एंड्स हैं क्रॉस सेक्शन के, इनके दरमियान में कितना डिस्टेंस है। ओके, जो क्रॉस सेक्शन के एंड्स हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है, दैट्स 40। ओके, यू डन दिस इन ओ लेवल्स एज वेल। ये आपको फाइंड करना है। सो हाइट की जगह पे तो आपके पास सिर्फ 40 आ गया। एरिया ऑफ बेस, बेस इज दिस ट्राइंगल, लेट्स कॉल दिस, आपके पास ये 2D फिगर बनी हुई है साइड पे, इसको हम यहाँ पे x कह लेते हैं, इसको y कह लेते हैं, हमें x y e का एरिया चाहिए essentially. How do you find this area? This length is 30, this angle is 30 degrees, this angle is also 30 degrees. This is an isosceles triangle, and we know that this height is h. Height हमें पता है h है. Now we have two formulas for area of a triangle, half into base into height, या फिर half into AB sin C. दो sides पता हो तो AB sin C यूज कर सकते हैं, अगर आपको बेस और हाइट पता हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज कर सकते हैं। नाउ वी डोंट हैव टू साइड्स, आप एक साइड निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लें। इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, रिमेंबर इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, अगर आप इसको दरमियान से इस तरह से कट करते हैं तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे कट होता है। So if I were to call this point something as well, let's say this is point O. OY and OX, they are equal to each other. Now, with respect to the angle 30, you have one side that is adjacent and the other side that is opposite. Opposite or adjacent में कौन सी ratio होती है? Tan. So we could say tan of 30 degrees. कोई भी triangle use कर लें इसमें से. Let's say मैं ये वाला use कर लेता हूँ. This is adjacent, this is opposite. Opposite is H divided by adjacent, which is OX. तो OX क्या हो जाएगा? OX is going to be equal to H over tan 30. All right, or yeah, so H over tan 30. Now, what's the value of tan 30? You can just put that in your calculator. Your calculator is going to give you square root of 3 over 3 for that. 3 ऊपर चला जाएगा. It will become 3 over square root of 3 multiplied by h. 3 over square root of 3. This is just square root of 3. So OX is equal to square root of 3 times h. This is the length OX. All right. ये आप कैलकुलेटर में डाल दें. 1 over square root of 3 over 3. That's going to give you square root of 3. All right. ये आपके पास OX लेंथ आ गई. अब ये ट्राइंगल तो पूरी आपको कंसिडर करनी है, तो पूरी बेस क्या आ गई? XY. What's that length? 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको. XY turns out to be 2 square root of 3 times h. So you have the base of that triangle. All right, you have the base of that triangle. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके फॉर्मूला में इनपुट कर दें. Half into base into height. What's the base? Base is 2 square root of 3 into height of the triangle. Triangle की height की बात हो रही है. That's h here. Write h here. Now you just simplify this and see what that gives you. 2 and 2 get cancelled. Sorry, 2 square root of 3 h भी था यहाँ पे साथ. XY की length में. There was also an h with 2 square root of 3. So that's 2 square root of 3 times h. 2 and 2 get cancelled. And we are left with 40 square root of 3 into 8 square. And that is what we wanted to prove here. First part में इसने ये prove करने के लिए कहा था कि volume equals this. Is that okay? Any question on this? Volume ये आ गया आपके पास. ठीक है? Let's move on.
second part. In the second part, it says, find the rate at which H is increasing when H is equal to 5. अब देखिए उसने क्या information दी है. उसने कहा water is poured into the container at a constant rate of 200 centimeter cube per second. That means we know what dV over dt is. That is 200. That is given. We need to find the rate at which H is increasing. So we are looking for dH over dt. ये find करना है. किस point के ऊपर? When H equals 5. इस point पे आपको dH over dt निकालना. Now you have a relation between V and H here as well. In the first part में जो proof किया, that's V equals 40 square root of 3 multiplied by H square. Okay. Now, if you were to differentiate it, that would give you dV over dH, because that's something that we will need for using the chain rule. You multiply by 2, constant 40 square root of 3 तो वैसे ही रहेगा. H square का derivative क्या आएगा? 2 multiply होगा यहाँ पे आके. It becomes 80 into square root of 3 times H. That's dV over dH. And now we just use chain rule. dH over dt. What should this be equal to? You have two fractions. The first fraction's numerator is going to be dH. The second fraction's denominator is going to be dt. और दरम्यान में आपके पास क्या आएगा? Third variable आ जाएगा, which is v in this case. So you have dv here and dv here. dH over dv, that's reciprocal of this. So it becomes 1 over 80 square root of 3 times h into dv over dt, which is 200. Now we know हमें किस point पे find करना है जब h की value 5 है. यहाँ पे आप h 5 input कर दें and see what that gives you. dH over dt turns out to be 1 over 80 square root of 3 into 5 multiplied by 200. 200 over 400. Yeah, 200 over 400, that's going to be 1 over 2. So that you get 1 over 2 square root of 3. That is dH over dt. आपने rate find करना था. Now this is the exact value. If you want, you can also write this in decimals. उसने exact value का पूछा तो नहीं हुआ, तो आप इसको decimals में भी लिख सकते हैं. That's also going to be okay. All right, so that's the rate of change of height. That's what we were looking for in the second part. Any question on this? No. ठीक है. अच्छा देखें जो h की वैल्यू 5 हम इनपुट कर रहे हैं ना, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं. If you want, you can also input that right here. डेरिवेटिव निकाल के अब यहीं पे h की वैल्यू 5 इनपुट करके पहले आप देख सकते हैं कि ये 400 square root of 3 आ जाएगा, and then input that in the chain rule. That's also okay. However, don't just input that value of h in the original volume function. इसमें आप input करेंगे तो वो तो आपको वॉल्यूम की वैल्यू मिल जाएगी उस पॉइंट के ऊपर. आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, आपको dv over dh निकालना है. उसके लिए आपको पहले डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद इनपुट करनी है वैल्यू. पहले नहीं इनपुट कर सकते. ठीक है. So that's important that you differentiate first and then after that you input that value. Differentiate करने से पहले h की वैल्यू 5 नहीं इनपुट करनी. ठीक है. All right, this is question number 51 from the worksheet. We have this function f, that's defined like this, and the domain of this function is x greater than -1. In the first part, it says find the derivative of f of x. So you're already done with that. Let's do that quickly here. F of x equals x plus 1 whole raised to power -1. We need to find the derivative of this. इसको आप power form में लिख लें पहले. Numerator में ले आए. Plus x plus 1 whole raised to power -2. That's what the function is. What about the derivative? F dash of x. You just apply the power rule on both of those functions. -1 multiply हो जाएगा. X plus 1 remains as it is. Subtract 1 from the power. And multiply with the derivative of the part that is inside the power, which is 1 plus
minus 2, so this is minus 2 into x plus 1 whole raised to power minus 3 into 1. That's what the derivative turns out to be. इसको simplify करके लिखेंगे. It becomes minus 1 over x plus 1 whole squared minus 2 over x plus 1 whole cube. That's the first part. Just have to find this derivative. ठीक है? Any problem with this? Let's look at the second part of this. In the second part, it says state with a reason whether f is an increasing function or a decreasing function or neither. Increasing का मतलब है कि आपने prove करना है it's always positive. Decreasing it's always negative. Neither means it could be positive or negative. दोनों में से कुछ भी हो सकता है derivative. Now we need to think about this derivative. Can we say it's always positive or always negative? So this is what the derivative is. Minus 1 over x plus 1 whole squared minus 2 over x plus 1 whole cube. Now what about the values we could get for this derivative for different values of x? अच्छा, उसने यहाँ पे ना एक डोमेन भी दी हुई है ऊपर. Let's say वो डोमेन ना दी होती, अभी के लिए let's say वो डोमेन ना दी होती. How would you think about this? Look at the first expression. Can you say anything about this? Is it always positive or always negative? Always negative. Why? ये पार्ट पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, तो द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव. मेक सेंस? ये जो फर्स्ट आपकी टर्म है, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव. व्हाट अबाउट द सेकंड टर्म, दिस होल थिंग? व्हाट कैन वी से अबाउट दिस? ईमान शाहिद? नो, इट्स नॉट ईमान. ओके, खदीजा हसन. खदीजा? Minus 2 over x plus 1 whole cube. Can we say anything about this? It could be any of them, right? It could be positive or negative. ये कुछ भी हो सकता है. Why? Because ये cube है ना. Cube में अगर आप x की वैल्यू को ऐसे इनपुट करो कि अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव हो, तो फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू में 1 इनपुट करो तो क्या होएगा? ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव होएगा. ओके? अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ, लेट्स से x इक्वल्स -5, ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव इंटू नेगेटिव, इट विल बिकम पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो द सेकेंड पार्ट कुड आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव. द सेकेंड पार्ट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो कैन वी से एनीथिंग अबाउट दिस होल फंक्शन देन? होल डेरिवेटिव, पूरा डेरिवेटिव क्या होएगा? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट. इसका मतलब क्या होएगा? इट्स नाइदर एन इंक्रीजिंग फंक्शन नॉर अ डिक्रीजिंग फंक्शन. मेक सेंस? अगर कोई डोमेन नहीं दी होती, वी वुड से इट्स नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. इज दैट ओके? ये क्लियर है सबको? अब इन दिस question you have a domain given. It says x is greater than -1. You also have to think about that. X is greater than -1. उसने एक restriction दे दिया आपको. Now keep that in mind and figure out whether this function is increasing or decreasing. X is greater than -1, ये आपको domain दी हुई है ऊपर. What about the first part? What about the first part? This part is negative or positive? This is still always negative, this whole thing, because no matter what value of x you input, ये part positive रहेगा और बाहर negative लगा हुआ है, ये तो हमेशा negative रहेगा. What about the second part now? इस part को क्या होएगा? देखिए, x is greater than -1. X is greater than -1. Now if x is greater than -1, what happens to this expression? x plus 1 whole cube. ये एक्सप्रेशन क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होएगा और बाहर इसके माइनस लगा हुआ है.
So this whole thing is also always negative for this domain. अगर x greater than -1 है, इस domain के लिए दोनों terms negative है हमेशा. इसका मतलब क्या होएगा, जो पूरा expression है, that's also always negative. Make sense? Now that's the reasoning behind all of this. आपको करना क्या है, working का show करनी है. It's a 1 mark question. All you have to write is, it's a decreasing function. F of x is a decreasing function. Why? Because f dash of x is negative or less than 0. This means this is a decreasing function. This is what is going to get you that 1 mark. You'll say f dash of x is negative, always negative. That's why it's a decreasing function. ठीक है? ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपने सोचना कैसे है इसके बारे में. ठीक है? It's better to just leave it like this as well. कि आप उसको बता रहे हो कि ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है, एक्सप्रेशन नेगेटिव है. If it's 2 marks, you should definitely do that. This is just 1 mark. आपको सिर्फ इसका मार्क मिलेगा f dash of x नेगेटिव लिखने का और साथ डिक्रीजिंग फंक्शन लिखने का. Yes, that becomes easier to understand if we take minus sign common outside. अंदर वाला part हमेशा positive होएगा फिर, तो आप उस तरह भी कर सकते हो. Right? We did another example earlier जिसमें हमने minus common लेकर किया था. That becomes easier to understand as well. वो भी कर सकते हैं. ठीक है? Any problem with this? Let's look at the third part now. In the third part, it says there's a function g that is defined like this. You see, it's exactly the same function as before, but now it says x is less than -1. उसने domain change कर दिया. Expression वही है, domain is different. We need to find the coordinates of the stationary point on the curve y equals g of x. Stationary point कैसे आता है? Derivative को 0 से equate कर देंगे, उसको solve कर लेंगे. Now let me write that function down here first of all. Function g of x is equal to 1 over x plus 1 plus 1 over x plus 1 whole squared. And the domain is x less than -1. We have already found the derivative of this expression. In the first part, we could just use that here. It was -1 over x plus 1 whole squared minus 2 over x plus 1 whole cube. That was the derivative that we had in the first part. All you have to do is, you have to put the derivative equal to 0 because you're looking for our stationary points. इसको 0 से equate कर दें. On the right side, you would have -1 over x plus 1 whole squared minus 2 over x plus 1 whole cube. Now you solve this equation. क्या करें इसको? LCM ले लें. LCM क्या होगा इसका? LCM क्या होगा इसका? x plus 1 whole cube. Highest power होती है ना? x plus 1 की highest power यहाँ पे क्या है? 3. LCM would be x plus 1 whole power 3. Or an easier way is just to multiply the whole equation by x plus 1 whole cube. x plus 1 whole cube से multiply करते हैं पूरे equation को. उससे क्या होएगा? First term क्या बन जाएगी? Minus into x plus 1 और second term में सिर्फ -2 रह जाएगा. This is what I'm doing. I'm multiplying by x plus 1 whole cube. इससे multiply कर रहे हैं. ठीक है? Now we just solve this equation. इससे क्या मिलता है हमें? minus x minus 1 minus 2 equals 0. X equals -3. Now does that fall in the domain? Yes, x less than -1 था, ये domain के अंदर आ रहा है. उसने क्या coordinates find करने हैं? आपको x coordinate तो मिल गया. You need to find the y coordinate, put that back in the function. You'll get the corresponding y coordinate. Y equals 1 over -3 plus 1 plus 1 over -3 plus 1 whole squared. You get -1 over 2
plus 1 over 4 from this, which is going to be minus 1 over 4. So the y coordinate is minus 1 over 4. The coordinates of the stationary point should be minus 3 and minus 1 over 4 from this. ठीक है? Any problem? Okay, so we just have to find the derivative and put that equal to 0 here. ये आपका हो गया. This is question number 33 from the worksheet. A curve is such that dy over dx is 2 over square root of x minus 1. Derivative दिया हुआ है. First part में we have to find the equation of the curve. So how do you go from dy over dx to y? You integrate it. dy over dx को power form में लिख लेते हैं पहले. It becomes 2 into x raised to power minus 1 over 2 minus 1. Right? इसको power form में लिखेंगे. Square root of x ऊपर आएगा. Negative power हो जाएगी. And this is what it will become. Right? सारा ये बंद कर दें. Okay, dy over dx ये हमारे पास. Let's find the equation of the curve. Let's integrate this. 2 is the constant that remains as it is. X की power में 1 add कर दिया आपने. Minus 1 over 2 plus 1. What does that become? 1 over 2. And you divide by that increased power. 1 over 2 से आपने divide कर दिया. What's the derivative of integral of minus 1? Minus x. This 2 goes to the numerator and it becomes 4x raised to power 1 over 2 minus x. But we also have a plus c there. So y equals 4x raised to power 1 over 2 minus x plus c. ये आपके पास इक्वेशन आ रही है. अब आपको c की वैल्यू फिगर आउट करनी है. How do you find the value of c? You have a point given for that. 9, 5 is a point that lies on the curve. You just input these values in the curve. You say let's input 9 and 5 and see what that gives you. Y की वैल्यू 5 input कर दी. X की जगह पे 9 input कर दें. You get 4 into 9 raised to power 1 over 2 minus 9 plus c. This is going to give you the value for c. ये देख लें आपके पास क्या आती है. 5 plus 9, that is 14. 14 minus 12. Is it going to be 2? Can somebody confirm this? Yeah, c is equal to 2. Okay, so y equals 4x raised to power 1 over 2 minus x plus 2. This is the equation of the curve that we were looking for in the first part. Any problem with this? No? Integrate किया, उसमें प्लस सी आ रहा था. सी की वैल्यू फिगर आउट करने के लिए पॉइंट इनपुट कर दिया and you got that equation. That was first part. That was 4 marks. Easy 4 marks. Let's look at the second part now. Find the coordinates of the stationary point on the curve. How do you find stationary point of a function? You differentiate the function, put that equal to 0. Derivative 0 से equate करना है. Let's have a look at this. We already have the derivative. So उसको आपको differentiate करने की भी ज़रूरत नहीं है. The derivative is 2 over square root of x minus 1. Put that equal to 0. And that gives you 2 over square root of x minus 1 like this. अब इसको आपने solve करना है. You can take 1 to the other side and that gives you 2 over square root of x. You get square root of x equal to 2. You square both sides and that gives you x equal to 4. x की वैल्यू 4 आ गई. ठीक है. अब क्या करना है? इस वैल्यू को वापस इनपुट करना है y में. उसमें इनपुट कर दें. फंक्शन आपने फाइंड कर लिया फर्स्ट पार्ट में. उसमें आप x की वैल्यू इनपुट कर दें. You get 4 into 4 raised to power 1 over 2 minus 4 plus 2. ठीक है. ये इसमें इनपुट कर दिया. ये आप देखें क्या आता है. 6 minus 4 plus 2 which is no 8 minus 4 plus 2 that turns out to be 6. So y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है? 6 आ जाती है. So we have x equal to 4
and y equal to 6 here. तो आपके पास पॉइंट क्या आ गया 4 and 6. दैट्स द स्टेशनरी पॉइंट. इसमें क्या मसला है? 2 पॉइंट्स तो नहीं आ रहे, एक ही पॉइंट आ रहे हैं. और आना भी एक चाहिए. देखा क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है स्टेशनरी पॉइंट. वो स्टेटमेंट बहुत प्रीसाइज होती है. अगर मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं वो कहता है स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करना है. तो आंसर एक ही आ सकता है. व्हाट वाज द प्रॉब्लम? ओके ठीक है. स्टेशनरी पॉइंट आपके पास आ गया. कोऑर्डिनेट्स दोनों स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना, दोनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे. तो आपके पास 4 and 6 दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट. ठीक है, दैट वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. पार्ट 3, find an expression for the second derivative and determine the nature of the stationary point. That's pretty straightforward. अच्छा, last part looks kind of different. वो हम कर लेते हैं. पार्ट 3 भी कर लेते हैं साथ ही पर. थर्ड पार्ट में इसने कहा है find an expression for the second derivative and determine the nature of the stationary point. Let's find the second derivative. We already have the first derivative. The first derivative is 2 into x raised to power minus 1 over 2 minus 1. You differentiate it once more to find d square y over dx square. What does that give you? 2 into minus 1 over 2 into x raised to power minus 3 over 2, and that becomes minus x raised to power minus 3 over 2. That's the second derivative. इसके अंदर आप x की वो वैल्यू इनपुट कर दें जो स्टेशनरी पॉइंट वाली वैल्यू थी. 4 x की वैल्यू इनपुट कर दें. So you input x equal to 4 here. What do we get from this? The second derivative turns out to be minus into 4 whole raised to power minus 3 over 2. या बेशक कैलकुलेटर में सीधा डाल दें और देखें आपको क्या मिलता है. कोई नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा. minus 1 over 8. minus 1 over 8 इससे आएगा. This is the negative value. Since it's a negative value, second derivative negative है. तो ये पॉइंट क्या होएगा? मैक्सिमम पॉइंट होएगा. ये आपको थर्ड पार्ट में करना था. यस, how can you say that this is negative? What if the value of x was negative? Although उसमें मसला हो जाता है कि वो स्क्वायर रूट लेता है, वो एरर आ जाता है उससे. लेकिन अगर ये पावर में -3 over 2 के बजाय -3 होता तो वैल्यू नेगेटिव ही तो हो सकती है. अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो x क्यूब भी नेगेटिव होएगा. माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. सो यू शुड ऑलवेज इनपुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू इनपुट करके चेक करें. ठीक है. सो इट्स अ मैक्सिमम पॉइंट. एनी प्रॉब्लम विद दिस? नो. लेट्स मूव ऑन. लेट्स लुक एट द लास्ट पार्ट नाउ. The last part is slightly different. It says the normal to the curve at P makes an angle of tan inverse of K with the positive x-axis. Find the value of K. So there's a point P somewhere. No, there is a point P. So we know that point P. P is 9, 5. इस point पे जो normal है उसका angle with the x-axis is tan inverse of K. You need to find the value of K. Normal is a straight line. Straight line में के angles कैसे निकालते हैं? We did this in coordinate geometry. Does anyone remember that? We have a formula for that. क्या formula था? Tan plus minus. Okay, so one formula that we had was जब आपने x axis के साथ एंगल निकालना उसके लिए तो हम सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. tan theta equals m. Tan theta equals the gradient. This is one formula that you have. जब आपने x axis के साथ फिगर आउट करना हो, या जनरल फॉर्मूला फॉर एनी टू लाइंस, वो क्या था? m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. That works for any two lines. तो अगर x axis के साथ है तो आप ये भी कर सकते हैं. x axis का ग्रेडियंट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है? 0 होता है. तो इसमें से एक ग्रेडियंट 0 हो जाएगा. लेट्स से m2 0 है तो m1 minus 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 into 0. इससे आपको m1 ही मिल जाता है. तो अगर आप ये सेकंड फॉर्मूला याद रख लें तो ये फर्स्ट तो उसी का एक स्पेसिफिक केस है.
जब एक ग्रेडियंट 0 हो जाएगा तो आपको वही चीज़ मिल जाएगी. एक्स एक्सिस है ना, उसने कहा आपने नॉर्मल का ग्रेडियंट निकालना है एक्स एक्सिस के साथ. एक्स एक्सिस ग्रेडियंट 0 होता है, तो आपको सिर्फ ये करना है नॉर्मल का ग्रेडियंट निकालना है और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना. दैट्स ऑल दैट यू हैव टू डू. हाउ डू यू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल? ग्रेडियंट ऑफ कर्व निकालें, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल फिगर आउट कर लें. दैट विल बी द ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल. ओके, लेट्स डू दैट. सो वी हैव द डेरिवेटिव गिवन ऑलरेडी, दैट्स dy over dx. That was 4x raised to power, no, 2x raised to power minus 1 over 2 minus 1. सबसे पहले आप इसमें x की वैल्यू इनपुट कर दें 9 to get the gradient of the curve at p, right? Put x equals 9, what do we get from that? dy over dx equals 2 into 9 raised to power minus 1 over 2 minus 1. That's going to give you 2 over 3 minus 1, which is minus 1 over 3. This is the gradient of the curve at the point P. What about the gradient of normal? Iska negative reciprocal, and that is going to be 3. ठीक है, gradient of normal आ गया. What about the angle of this gradient with the x-axis? You can just use that formula. Tan theta equals the gradient, where theta is the angle of the normal with the x-axis. Gradient के equal कर दें इसको. This gives us tan theta equal to 3, and theta turns out to be tan inverse of 3. उसने हमें क्या कहा था? उसने कहा था the angle that the normal makes with the x-axis is tan inverse of k. So if you compare with that, the value of k turns out to be 3, and that is what we were looking for. K equals 3 in this case. तो जो आपका नॉर्मल का ग्रेडियंट था वही आपकी k की वैल्यू थी essentially.